Very good evening, everyone. My name is Arya. And I am Anish Patil. I would like to begin with a quote by Walt Disney. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Acknowledging that, we welcome you all for today's talk on the future of startups in India and its emerging sectors, presented to you by E-Cell VNIT. E-Cell is the entrepreneurship cell of Visvesvaraya National Institute of Technology. The very purpose of E-Cell is to foster a community of contemporary as well as seasoned entrepreneurs. For today's session, I would like to welcome our guest speaker, Mr. Prasad Lendwe, sir. Prasad Lendwe is an influencer, entrepreneur, and investment expert. He needs no introduction. He is known as the new age financial will, the mastermind behind Convey by Finnovations, as well as the founder of Finnovations. Finnovations, as a company, was officially formed in 2018, taking forward his vision of spreading financial awareness. Prasad sir has come up with a series of courses designed for amateurs and beginners. From the basics of stock market and more advanced topics like fundamental and technical analysis, he has covered it all. Prasad sir plans to introduce the courses in different vernacular languages as well for maximum reach. He has created an all-inclusive platform where people can learn about investments. He wants to enhance the learning process and make the financial knowledge easily available. Today's talk will allow you to tune into experience about future startups, stock market, and investments through the eyes of an expert. And who'd be better than an influencer like Prasad sir, having a great impact on today's youth? So brace yourself to learn some exclusive strategies, script your thoughts, and improve your command as he shares his knowledge and anecdotes to help your initial steps into the world of startups. Over to you, sir. Thank you so much, Team Startup Conclave, for inviting me, for having me here. And my today's topic is future of startups and emerging sectors in India. So the team has allocated 30 minutes to share my experiences with you, and it will be followed by 15 minutes of question and answer session. So today's video will be like today's session would be about I'll be telling you the another side of startups. We'll also talk you about some of my experiences, practical experiences, like what I have learned, where the things went wrong, so that you can learn from those mistakes and you can save a lot of time while building a product or you know growing your startup. So first of all, I'll just start with the future of startups. So you know the startup in India, as everybody knows, started in India around 2007, 2008 when Flipkart and other companies started. InMobi was the first unicorn, which became unicorn I think around 2014, and then it was followed by lots of startups. Now more than 100 unicorns are there, but there is one problem. We generally talk about valuation, but when it comes to finance, so valuation completely depends on the growth of the company. It completely depends on the positive cash flow of the company, profitability, and how much free cash flow the company is generating. So the major problem with the recent startups that I would like to highlight here was, and there are lessons to learn from all these things. Why I'm telling you, there is a reason. So last year, Paytm came up with the IPO around this time only, November, and the issue price was around 2100 rupees, and with a market capitalization of 1.49 lakh crore. And everybody was talking like, this is a very big news for startups. All the VCs, all startups were like praising Vijay Shekhar Sharma and Paytm. But after 15 days, the picture changed. Everybody was cursing them. Investors were cursing them. Reason being, the company was extremely overvalued. Company was loss making. So if you're a small company with losses, then that is fine because private investors are fine with losses. But when it comes to public investors, then they are not fine with the losses. Today's news, Twitter decided to fire around 70% of Twitter India workforce. And they are firing like anything because they are losing $4 million a single day. Every single day, they are losing $4 million. So whenever there is a pressure of profitability on the startup, such kind of things happen. So what went wrong? The things went wrong with financial planning. So for any startup, according to me, the ideal startup is the one which is fundamentally strong. And what do I mean by fundamentally strong? It should be able to grow without raising external money. So if you're starting up, you don't have money, then at starting stage, it's fair to raise the money. But for every stage of growth, if you're raising money from Series B, Series C, Series D investors,
then it becomes inherent problem with the startup. And that is what happened with you know uh, this car trade. That is what happened with Policy Bazaar. It is also listed and facing the similar kind of issue. Then Paytm and MobiKwik are also planning to go with IPO, but they are not getting any kind of response so far. So you know fundamentally it should be strong. So that is the point number one. So many of the unicorns are right now struggling. In the next 1 or 2 years, you'll be seeing some big news related to startup failures. Why I saying so? Because many of the startups, we as a human being are very much attached to the fame, and so when any company raises money, so it becomes like the founders get a lot of fame, so they become quickly popular. The media covers them. If companies bootstrap profitable, nobody cares. Nobody gives them a shit like what they are doing. But ultimately, if we go back to 100 year back, at that time there are no VCs. The ultimate way of running a business was to make a profitable business. So when you are starting a startup or a business, so you should think like you are starting a business and not a charity. So cashbacks and other things will be helpful for initial acquisition, but later on you'll have to figure it out like how can I make money. So if you're at idea stage, there is one good advice or big advice, and that is like look at the idea which can be monetized easily, where you can make good amount of money, where people will be able to pay you. So many of the startups like Dunzo, as I can see, so it is like they have raised like more than $100 million and still can't, even make the revenue of 70, more than 50 crore. So that is around $7 to $8 million. So why such kind of things are happening? Because the platform that Dunzo runs, it's very difficult to monetize that. The competition is also very, very high. So you need to look at, it's not just about competition. India is a land of opportunities. Why I'm saying so? So just take an example. I'll continue with this topic. Just take an example like what is happening in China right now. So what is in China right now? So few days back there was a news like employees of Apple, uh, particularly labor, they were jumping off the walls in China. Why did it happen? Because there were some cases of coronavirus in that particular mega factory. So it is Apple's big, Foxconn is Apple's biggest contract manufacturer. So and it was Foxconn facility. So what is contract manufacturing? Contract manufacturing is like, Foxconn manufactures the iPhone, but it is not their own product. They manufacture the product for some different companies or different smartphone companies. So recently they had tie up with Vedanta, and so so why this is happening in China? Because there is a zero COVID policy. If there is a single case, they just want to have a zero cases. If there is a single case, they will have put some lockdown in different cities, and that is what happening right now. And that will keep happening as far as I think, because uh, there is a rule in China कि अगर कोई भी president है, so they can become president for maximum 10 years. So what Xi Jinping did, उन्होंने वो 5 साल से बढ़ा दिया, उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी बिकॉज उनका 10 ईयर हो गया था. So they wanted to extend the time period. What he did, he just changed the policy and became president again. So this is like good for India, maybe bad for China, but this is a very good for India because lots of companies are leaving China because of this. And we know like what happened with some other companies. They are like ByteDance and that Jack Ma's company, Alibaba, last year. So Chinese government is like very ruthless on Chinese companies, particularly technology companies, and now they are becoming ruthless on manufacturing companies as well. So more and more companies are leaving. So it is benefiting 2 to 3 countries, particularly mainly Vietnam and India also. So there is a good opportunity if you want to enter into manufacturing segment, contract manufacturing or manufacturing. It is going to get huge demand in the coming time period. I'm very very bullish on that particular sector for at least next 10 years. यहाँ पे आएगा तो ये तो पक्का है. तो यहाँ पे who will get benefited? The small जो parts बनाएंगे वो है, उसमें जो traders रहेंगे who will be like middlemen buying from this, providing the same to the contract manufacturers. So such kind of things will emerge in the next 5 to 10 years, and you can have a close look on this sector and you will get a fair idea. Now jumping back to India. So India, why I said it is a land of opportunities? Because right now we are, this is the best time to start any startup or company. You are at a perfect time. So generally people say that should I start now, later or something? But generally it is said that you start now only. And currently the time is, or the industry is also supporting a lot. The economies, as you can see, all the economies all around the world,
everyone is facing recession except India and few other countries. But India is growing very, very fast. You'll be seeing like India jumping to top three economies in the next 5 years. As so, when it comes to startup and building the startup, so there was a way. I know to build a startup you need money, and आप में से भी ज्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा कि एक आइडिया है अपने पास, तो एक फंडिंग वगैरह रेज करेंगे, दो चार वीसी से कांटेक्ट करेंगे, फंडिंग रेज करेंगे, एंड देन द ट्रेन विल गेट स्टार्टेड. बट एक्चुअली द थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल. So VCs do not put money that easily because competition तो बढ़ ही रहा है. और अभी एक प्रॉब्लम क्या आ गया है कि अब कई बार ऐसे हुआ कि last 2-3 years में the wave was so strong that this VCs funded companies which were just at idea stage. कुछ हुआ नहीं execution. Earlier they used to focus like there should be some traction, there should be some revenue, and then they used to fund that. Now recently they started funding ideas startups and the things didn't work out the way they wanted, and and they lose a lot of money. In case of Paytm, the SoftBank or दो funds थे, Vision Fund 1, Vision Fund 2, both failed. So I don't think they will come with Vision Fund 3. तो जो बड़े बड़े सीरीज सी सीरीज डी राउंड आते थे वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे because all their investment went wrong with WeWork in USA, in India, Ola, Oyo, all their investments are not working out well, right? So that is the case. Every month lots of institutional investors are exiting Paytm, and Oyo is also looking for the IPO. And as far as my study is concerned, I didn't found any good qualities in the business so far. That is my personal opinion. And as per my opinion, it won't perform well in the public market, that is IPO and stock exchange. So huge opportunity. But the problem is that many Indian entrepreneurs are not able to come up with the ideas which are which can be monetized. For example, ideal startup, according to the people, have lots of role models in India, and it is good to have kind of role models. But if you look at the business of Tata, it is always has been profit driven business. They have one cash cow. The business should be like this: build one cash cow. Like Tata Group has one cash cow. What is that cash cow? That cash cow is TCS. TCS generates a profit of around 45,000 crore every year. Out of that profit, around 70-75% profit goes back to Tata Trust. Tata Sons. Tata Sons is the holding company. Goes back to Tata Sons as a dividend in the form of dividend. And then let's say 40,000 का 70% मतलब मान लेते 32,000 है, उतना चला गया Tata Sons के पास. Then that money is utilized to build some other businesses. 4 to 5 years back, Tata Motors was struggling a lot. So that money was used to make Tata Motors profitable. And I think the Tata Motors is doing very, very good. Their recent cars like Tata Punch है, Harrier है, उसके बाद एक और Nexon है. So they did very, very well. The same money used for Tata Power as well. So it is also doing very, very well because they have created a vertical integration of EVs, जहाँ पे Tata Chemical बनाएगा batteries, Tata Power supply करेगा power, Tata Elxsi design करेगा उसके chassis and all, और Tata Motors automobile बना के बेच देगा. And if you pay attention to the recent news, so Tata Group is also interested in contract manufacturing because that is the next big thing that everybody knows right now in India, and that is where the big revolution is going to happen. Of course, service business will always become a big star in India's economy, India's startup ecosystem. But if you talk about the new areas where lots of demand is going to come, that is manufacturing for sure. So this is the way the Tata Group operates. They have one cash cow, and that cash cow is being used to build other businesses. So when you are starting a startup, make sure you have one cash cow and use that cash cow to build some other streams of income, other streams of businesses. And that is how Google also does. They make lots of money through advertising. So advertising from Google and YouTube, and then they use that money to build lots of products. You must be using lots of free products from Google. They are possible because they have one cash cow. So always remember whatever business you are building, because just remember there is a very big lesson, like what people, entrepreneurs at early stage, they think very, very short term, and later वो पछताते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी लंबा सोचा ही नहीं था. Why? I tell you with an example. Let's say your startup has a valuation of 10 crore. You raise 1 crore, which means you have diluted 10%, right? So 1 crore you will spend in maybe next 1 year, 1.5 year. Let's say 1.5 year में 1 crore खत्म हो जाएंगे.
But the VC or the investor who has put money that is 1 crore rupees, he will get 10% for lifetime. जब तक आपकी कंपनी है तब तक वो 10% उनके पास है. So that money that you'll be raising, it's not a permanent money. It's a temporary money that you'll be using for your growth. After that, it will be gone. So always remember, when you are raising a money, think twice, think thrice, and second thing is like raise money from credible people. Raise money from, it's not just like कि कई बार लोग सोचते कि ठीक है अच्छा वीसी है, नाम अच्छा सुना है तो रेज कर लेते, बट इफ यू लर्न द story of housing.com, like what happened with the housing.com, why it failed. That's a very great case study. So you'll get an idea like कि कहाँ से पैसा raise करना चाहिए. So always remember all these basic things while raising the money, and then you can't depend on the external money every time. Next time आपको raise करना है तो series भी लाएंगे तो और 5-6% dilute करना पड़ेगा, 10% dilute करना पड़ेगा. So companies like Paytm and all, they have raised a lot of money कि promoters के पास hardly 10% बचा है, and then you don't have a control over the company. Then you can't decide anything. Tata Group, Ratan Tata was the chairman. Now Tata Sons previously, I have forgotten his name. He's now N. Chandrasekharan. He is now the Tata Sons chairman. Now he can control everything because they have majority stake. Always remember, whatever the company you are running, at least plan like after 10 years, you will be holding 50-51%. Mukesh Ambani owns 47% Reliance Industries, and that is how it operates. And then अगर कुछ भी changes करने हैं तो उनकी permission जरूरी है. ऐसा नहीं कि कोई अलग पर्सन आके कुछ बोलेगा कि हाँ ये करो वो करो. अगर हम ट्विटर की बात करते तो फाउंडर्स के पास ज्यादा स्टेक था नहीं तो उनका कंट्रोल भी नहीं था. कोई आके फिर कंपनी खरीद के चला जाता है. एंड देन देयर आर केसेस ऑफ होस्टाइल टेक ओवर्स. सो लॉट ऑफ थिंग्स डू हैपन. सो मेक श्योर किसी भी तरह की कंपनी शुरू कर रहे हो तो आपके पास वो मेजोरिटी स्टेक होना चाहिए. अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ ओनिंग अ कंपनी और स्टार्टिंग अ कंपनी, बिकॉज कंट्रोल कोई और करेगा तो फिर आपके हाथ में क्या है. इट इज जस्ट लाइक डूइंग कि हर चीज के लिए फिर तो परमिशन ही है. सो इट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आप बोलते हैं ना कि स्टार्टअप करना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, आई वांट टू invent something, I want to innovate something, I want to try something new. So there will be no difference between working under a manager and then working under VC, right? So एक लेवल तक ठीक है, आपके पास मेजोरिटी कंट्रोल है तो यू विल हैव पावर. You can disagree with the board, you can disagree with your investors. अगर आपके पास कंट्रोल है तो, because that is what in financial segment, that is what matters, right? अब क्या होता है कि फाइनेंशियल चीजों की ज्यादा अवेयरनेस नहीं है तो लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं है. जस्ट कीप रेजिंग एंड देन चीजें सही से होती नहीं है. देन मेनी स्टार्टअप्स डू फेल बिकॉज ऑफ इंटरनल थिंग्स ओनली. उनका प्रोडक्ट सही है, दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेस, दे हैव great product, they have great people also, but it doesn't work out because they do not have good investors, right? Or they did not do proper financial planning at the early stage. So that is another thing that I would like to highlight. And if you're starting, so so future, I mean, if we talk about startup, then one more thing that I would like to highlight. When you start a startup, look for one good techie. It could be your co-founder, it could be yourself, or it could be your employee. I'll just tell you my story. Before this convey, I started 2 startups, both failed miserably, and because of those lessons, I learned a lot, and it helped me. So what are the lessons that you'll be taking? Just keep them with you. Maybe you can note it down so that you need to avoid this mistake at any cost. It will save you at least a few months or year for you. So while building the startup, I'm not from tech background. So I outsourced the website and the app work to one freelancer who was based in Ghatkopar, Mumbai. Then at that time, I was pursuing my engineering in Pune. So I used to travel from Pune to Mumbai with the Deccan Queen train at 7:15 in the morning. I would reach there at 10. I would just finish my work and just come back by evening. So he told me like he would take 30-40,000 for the website, and then I did not have money. I actually came from a not even middle class, but sort of pure class family. So we did not have a regular source of income. So all my education happened through loans, the SBI loans. So so he needed 30 to 40,000. So I worked in call center in Banner Idea call center. And then with that money, I earned 30-40,000 working part time. My college time was 8:30 to 3:30. So I would go there by 5 to 9. I would work and I would get 6-7,000. So I made that money in 6-7 months. I paid them 20-25,000 in some installments. And then he gave me the website was ready by the time. And then I told him कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे डिजाइन वगैरह, तो इसमें थोड़ा चेंजेस कर देते. He said कि 5,000 एक्स्ट्रा लगेगा.
तो मैंने एक बार दे दिए फिर कि चलो 5,000 है, तो देन नेक्स्ट टाइम मैंने बोला कि और चेंजेस चाहिए, सेड 5,000 और लगेगा। आई टोल्ड हिम लाइक दिस वाज नॉट द केस, यू सेड कि जो भी चेंजेस है, इटरेशंस है, वो फ्री में हो जाएंगे और साथ में मेंटेनेंस भी फ्री में होगा, बट दैट वाज नॉट द केस, राइट? So I was fooled in that case, and then I got to understand the importance of having a techie in the team, because no matter what kind of product you build, ultimately आज के डेट में वो बनेगा तो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होगा। you will be needing basic website, you will be needing basic app, और उसमें फंक्शनलिटी वगैरह और बिल्ड करनी है तो आपको टेकी लगेंगे। तो जरूरी नहीं कि कोफाउंडर ही होना चाहिए, आप लोग हायर भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट अच्छी चाहिए होगी। तो you can even hire, the one thing that I did in the early stage, I went to internshala.com. I hired lots of interns, right? I used to pay them 5,000, 1,000 bucks as a stipend, and with that I started this company. और YouTube channel तो खैर चलने लगा, and we got good response, but we started building some startups. Our Convey app, we started Convey app, that also did well. Later on we started our influencer marketing agency, and we are building some more apps. So we are in particular into tech, and then we are based. Our tech team is based in Hyderabad, so we are particularly based in South, just because we understood the importance of having good tech is in the team. So no matter what kind of product you build, whether it's a service-based business or not, so you need a good tech in your team. That is again one more thing that I would like to highlight. And apart from that, yeah, so I think that is the thing. So when you are trying to build products or something, and then it takes patience. Like people these days are like in the age of 1 minute video, and in the age of TikTok and Instagram reels. Everybody is hoping for like कि success आ जाएगा तो 4 दिन में आ जाएगा, and then people are showing off like anything. That is what happening on Instagram and all. They're showing off with Lamborghini and all, but that is not the easy. That is not that easy. People are saying that कि हम 500 रुपए का कोर्स है, हम आपको सिखा देंगे कैसे मिलीनियर बनना है। अगर इतना इजी होता तो फिर हर कोई कोर्स लेता और मिलीनियर बन जाता। That is not the case. Earning money is very difficult. Making money by selling a product is very very difficult, extremely difficult at all in India. बिकॉज इंडिया में क्या है कि यूएस में तो इजी हो जाता है, वहाँ की स्टोरीज आप पढ़ेंगे तो वहाँ का पर कैपिटा इनकम 50 लाख है, यहाँ का पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख है। ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। तो यहाँ पे मोनेटाइज करना, लोग यहाँ पे क्यों नहीं, लोग बोलते कि यहाँ पे लोग चिंदी है, पे नहीं करते। थिंग इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पॉइंट हियर। इनके पास पैसा ही नहीं है। 1.5 लाख अगर इंडिया का एवरेज पर कैपिटा इनकम है, तो इमेजिन 1.5 लाख में क्या होता है आजकल में। कुछ नहीं होता है। मेजोरिटी पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन इंडिया is earning less than 25,000 per month. 90%। अब 90% 25,000 में क्या होता है? अगर अचानक से कोई बड़ा हॉस्पिटल का खर्चा आ जाए, क्या करेंगे लोग? एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू पे 1,000 1,500 के बड़े बड़े पैकेजेस आपके लेना, चाहे वो ओटीटी के हो या फिर आपके प्रोडक्ट के और उनके बच्चों के टेक के लिए हो। दैट इज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। So that is why these companies, if you observe these companies like Google, like Facebook and all, they have this one common thing. They do not charge people, they charge businesses, because that is the easy way to make money, right? What Twitter is doing, Twitter is charging ultra rich. Those who are having blue tick, they'll be ultra rich, and Twitter is charging advertisers, right? So Google is what? They are not charging for you, everything is free. आप उनका मैप यूज करो, सर्च यूज करो, देयर आर नो फ्रीलांसर्स, दे हैव अनदर वे। हम आपको ऐड दिखाएंगे, उससे पैसा कमाएंगे, बिकॉज पीपल हैव टाइम इन इंडिया, so they don't have money, so you'll have to do something, right? So that is the way they have figured it out. You also have to figure it out. Like in India also people will pay, but you'll have to provide that kind of value. और आपको प्राइस जितना कम से कम हो सके उतना कम करना पड़ेगा। And later on you can also think like how can I expand my business to overseas, और फिर बाहर जाके आप अच्छे खासे चार्ज कर सकते हैं। Maybe you can start a business which is targeting US citizens. वहाँ पे आप इजीली चार्ज कर सकते हैं अच्छा खासा, बिकॉज इफ यू लुक एट SaaS companies, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज कंपनीज लाइक Zoho, so Zoho is making like revenue of 4,000 crore, around that. They are making good profit, 1,700 2,000 crore का profit है। Why it is possible? Because they are charging US based businesses, तो डॉलर में कमाना इजी है, रुपए में कमाना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? तो जैसे जैसे अभी आप देख रहे हैं कि डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, so better it is like for Indian entrepreneurs, this is a big opportunity to build for world. Now I can see Indians are building for India, building for Bharat. Bharat means for tier 2, tier 3 and rural areas. Now it's time to build for world, because here the manpower is, यहाँ पे एवरेज जो टेकी है उसका जो सैलरी है that is 6 लाख रुपीज,
इन यूएस एवरेज टेकी का सैलरी जाता है 75 to 80 लाख रुपीज। तो आप यहाँ पे कम कॉस्ट में अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। बट वो क्या है कि थोड़े विजनरी लोगों की अभी जरूरत है, तो इंडिया को पर्टिकुलरली, बिकॉज अगर हम देखते हैं गूगल को, तो गूगल इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे डोंट थिंक जस्ट फॉर यूएस, दे थिंक फॉर द वर्ल्ड। Amazon is not flip, but Amazon is for world, but Flipkart is for India, right? Uber is for world, but Ola is for India and just 2 3 more countries. If you look at Swiggy, Swiggy is for India, but Uber Eats was for all over the world. So we need to think like that. You know, if you look at the Coup, which is a competitor of Twitter, that is just in India, but Twitter is all over the world. So that is the case with US. They think very very long, and they think long, and it's not just like that. They have perseverance. They have big vision to achieve those things. So Indians should focus on that, I think. We should not fall in the rat race of raising the funds कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में फेम आ जाए, शॉर्ट टर्म में थोड़ा कूल भी लगता है कि मैंने फंड रेज किया है, बट दैट इज अ शॉर्ट टर्म थिंग। इफ यू लुक फ्रॉम लाइक 5 years 10 years 20 years डाउन द लाइन, देन आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। सो व्हेनेवर यू थिंक, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म, एंड दैट इज बिकॉज आपको बिजनेस भी करना है तो लॉन्ग टर्म ही करना है। वो छोटा मोटा शॉर्ट टर्म के लिए फिर आते हैं जाते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है। तो बिल्ड, अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं तो इट शुड हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, इट शुड हेल्प समवेयर अदर टू द ह्यूमन स्पीसीज। तो इस तरह के कुछ आपको बिल्ड करना चाहिए, और ये कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब जरूर ध्यान में रखनी है। थिंक बिग, वेरी वेरी बिग। अदरवाइज छोटा सोच के फिर कुछ मिलता तो है नहीं, तो सब और सोचने में थोड़ा पैसा थोड़ी ना जाता है। सो थिंक वेरी वेरी बिग, ट्राई टू अचीव इट, बिकॉज इफ यू हैव विजन फॉर इट यू विल अचीव इट। बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ सोचा और आपको मिल जाएगा, बट इफ यू हसल, इफ यू वर्क हार्ड, देन अपॉर्चुनिटीज जो आएगी उनको किसी ना किसी को तो आप पकड़ ही लोगे। चाहे आपको जो आप डायरेक्शन में जाना चाहते हो वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके आसपास अगर आप भाग ही रहे हो, दौड़ ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं, और देख रहे हो आप डायरेक्शन के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो थिंग्स आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट इट्स लाइक कि यू शुडंट गिव अप। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे 2014 इज द ईयर when I started YouTube channel. I was in engineering, and there was no monetization or anything. It was a very small platform. 2G का जमाना था, वो ढंग से चलते भी नहीं थे वीडियोस। So, but it was my always vision to make India financially aware. That each and every Indian, जो मैंने points आपको बताए from financial angle, it's I don't want to limit them to myself. I want to just teach them to everyone in India, and so that फाइनेंशियली वो, मतलब चाहे स्टार्टअप हो तो उसको फाइनेंशियली समझ सके, वो बिजनेस हो तो उसको फाइनेंशियली समझ सके, अर्निंग है चाहे वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हो, उसे वो फाइनेंशियली समझ सके। तो इन सारी चीज़ों पर प्लान था कि मतलब शुरुआत से कि इसी पर कुछ फोकस करते। और फिर जैसे जैसे शुरुआत करी 2014 में चैनल शुरू करने के बाद तो कुछ भूल गया था मैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ 2 3 दिन तक सब लोग ट्रैक कर रहे हैं कि एक्साइटमेंट से क्या होगा क्या होगा, तो मैंने भी ट्राई किया, बट कुछ आया नहीं खास। एक महीने बाद देखा तो 14,000 व्यूज थे। 14,000 views at that time was very very big thing. I was very happy. Then I started reading the comments, and then people were very happy, and people said कि like, can't you cover fundamental analysis? अब ये भी कवर करो, वो कवर करो। तो इस तरह से वीडियो बनाए, and then 2017 तक, from January 2014 to March 2017, 3 years 2 months, इस टाइम में मुझे 3,000 सब्सक्राइबर्स आए थे। एंड माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स आई स्टिल रिमेंबर यूज्ड टू से, अरे मुंबई का निकल के उतने हो गए थे, तो बढ़ ही नहीं रहे। But I was not bothered with that because my vision was different. And comparison is the easiest way to, feel sad or to get sad. So don't fall in this particular thing like कि compare करना इससे उससे। यार आपकी जिंदगी है, आप अपने ढंग से जियो। उसको 50 लाख का सैलरी मिला है तो तुम्हें मिलना जरूरी नहीं, तुम अपने ढंग से जियो, तुम अपने व्यू से काम करो। So one thing, that happened with me is like my parent didn't force me to do anything. It was like they give me the freedom to do it. तो आपके भी पेरेंट्स अगर देते तो अच्छी बात है, नहीं है तो उनसे बात कर लो। जस्ट टेल देम लाइक डोंट कंपेयर विद शर्मा जी का बच्चा और उनका लड़का उनकी लड़की। जस्ट लेट मी डू माय थिंग, बिकॉज क्या है कि विराट कोहली एक है, वो अपने तरीके से खेलता है, राइट। धोनी अपने तरीके से खेला, सचिन तेंदुलकर अपने तरीके से खेलते हैं। आप अपने तरीके से खेलो जिंदगी में, जरूरी नहीं कि ये ऐसे इसने ऐसा बिजनेस चलाया तो मैं भी उसी तरह का ऐसा ही बिजनेस चलाऊंगा। आप अपने तरीके ढूंढो, आप खुद इनोवेटर बनो, उसी को तो इनोवेशन कहते हैं। तो आप अपनी जिंदगी में उससे अप्लाई करो और हर जगह उसे अप्लाई करो। और फिर जहां तक बात थी कि पहले 3 ईयर में कुछ आए नहीं 3,000 सब्सक्राइबर, और फिर मार्च और अप्रैल में फिर कुछ वीडियोस वायरल हुए 2017 में, और फिर 2 दिन में 36,000 न्यू सब्सक्राइबर्स आए थे, राइट। एंड देन वहां से फिर चीजें बदल गई। उससे पहले मैंने 100 ब्लॉग लिखे थे, इंटर्न्स को हायर करके, इंटर्नशाला से एक भी नहीं चला था। तो इट वॉज लाइक आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग।
मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ा कि मैं फेल हो रहा हूँ, बस मुझे ये चीज पता थी कि चलो कुछ ना कुछ नया ट्राई करके, तो चलो ब्लॉग नहीं वर्कआउट कर रहे तो वीडियोस ट्राई करते हैं, इस तरह के वीडियोस नहीं वर्कआउट हो रहे तो इस तरह के ट्राई करते हैं, बट ट्राई करते हैं, तो कीप ट्राइंग। तो इस तरह से तो 36,000 आए, फिर यूट्यूब को लगा कि इसने कुछ झोल किया होगा, तो डिलीटेड द चैनल, कि ऐसा कैसे हो सकता है 3 साल में कुछ नहीं और 2 दिन में आ गए, राइट। तो दे डिलीटेड द चैनल, आई रिक्वेस्ट देम कि मैन्युअली चेक कर लीजिए आप। उन्होंने मैन्युअली चेक किया एंड देन फिर हो गया, मतलब सब कुछ सही से, और वहां से फिर ग्रोथ मिल गई। देन वी बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन, एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए हो गया। तो हम फिनटेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 50 पीपल एंड many of them are developers and we build products like Convey app is one of our products. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो हमने रिसेंटली बिजनेस बिल्ड किया है, इसके अलावा हम कई सारे जैसे कोर्सेज बिल्ड करते हैं, तो वी कीप बिल्डिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, और उसे हम अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अपनी जो ऑडियंस है, हमारी फैमिली है, उसे टेस्ट करते हैं कि उन्हें कैसा लगा, फिर उसके बाद ऑल ओवर इंडिया हम मार्केटिंग करते हैं उसकी। तो दैट इज हाउ वी रन द थिंग्स। तो यही चीज है कि आप भी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहिए। जो मैंने पहले 2 स्टार्टअप्स किए, तो वहां पर भी मेरा एक विजन था कि ये करना है, बट नहीं हो पाया। लेटर ऑन आई फाउंड कि मेरा पैशन किस में, मुझे मजा किस में आता है, बिकॉज यू शुड परस्यू समथिंग कि जिसमें आपको सैटरडे संडे भी करो तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं एक्स्ट्रा काम किया हूँ। कोई बीच रात को भी आपको उठा के बोले कि यार ये इशू आ गया है, तो आप हट के उठ के आपको सॉल्व करना चाहिए, राइट। अगर वो चीज है आप में, तो इट मीन्स कि यू आर पैशनेट अबाउट इट। पैशनेट आई थिंक बहुत हाई वर्ड है आज के डेट में, बट यू शुड काइंड ऑफ फाइंड योर थिंग, लाइक कि जो आपको स्टीव जॉब्स कहते हैं कि यू शुड डू, you should love what you do and you should do what you love, वाइस वर्सा। तो उस तरह की चीजें आपको फाइंड आउट करनी है जिंदगी में। कोई भी चीज करो आपको, इट्स नॉट लाइक कि जॉब करना खराब बात है या गलत बात है। इफ आई वर पैशनेट अबाउट डूइंग अ जॉब, मैंने खुशी खुशी कर लिया होता। तो मेरा पैशन ये था कि मुझे फाइनेंशियली अवेयर इंडिया को करना, और आज भी हर एक चीज जो हम करते हैं, हर एक दिन की प्लानिंग होती है, तो वही आज सोच भी यही रहती है कि इस डायरेक्शन में जाना, ये चीज करनी है। तो उसी तरह से आप भी पेशेंस के साथ करिए। इट टेक्स टाइम, कि विजय शेखर शर्मा को आप, पेटीएम के जो विजय शेखर शर्मा, उनको आप आज जानते होंगे, 2 साल बाद पहले जानते होंगे। ही स्टार्टेड इन 1999। पहले 10 साल तक कोई नहीं जानता था उन्हें। तो दैट इज दिस वर्ड कि जो इंस्टाग्राम पे लगता है लोगों को क्विकली फेम मिला है, नहीं मिलता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इलॉन मस्क है, जिनको अभी आज का फेम है, 20 साल पहले कोई नहीं जानता था उन्हें। तो दैट इज द केस। इट टेक्स टाइम। फेम वेम के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप कुछ अच्छा कीजिए तो जरूर फेम भी मिल जाएगा, सब कुछ भी मिल जाएगा। एंड बस फेम के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस ना ले फाइनेंशियली कि जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक साबित हो। बिकॉज अगर आपके पास प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आपके पास पैसे हैं मार्केटिंग करने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फोकस ऑन दैट कि हाउ यू कैन रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, प्रॉफिट कमाओ, एंड प्रॉफिट इज द बिगेस्ट मेजर, प्रॉफिट एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये दो चीजें ऐसी है कि उसके बेसिस पर कोई भी आपका बिजनेस वैल्यू करता है रियल टाइम में। बाकी जो हाइप और बाकी चीजें ये टेम्पररी रहती है। So that is the thing, and as far as the India's future and other things are concerned, it's very extremely positive. And जहाँ तक सेक्टर्स की बात करूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि मैंने कहा कि वेरी पॉजिटिव है। और इंडिया के हिसाब से क्या है कि हर एक सेक्टर पॉजिटिव है। बिकॉज क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा, बिकॉज इंडिया में अभी भी बहुत सारा मार्केट अनऑर्गेनाइज है। जैसे मिठाई आप लेते हैं, तो आप लोकल दुकान से लेते हैं, अनऑर्गेनाइज मार्केट। यू कैन बिल्ड अ ब्रांड, यू कैन ऑर्गेनाइज दैट। दैट इज हाउ द कंपनी दैट इज बेस्ड इन योर सिटी, हल्दीराम, डिड। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज किया है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज पीपल प्रेफर क्वालिटी, राइट। सो दैट इज अ लेसन, बिग लेसन फ्रॉम हल्दीराम, फ्रॉम योर ओन सिटी, दैट यू कैन टेक। एंड उस तरह से आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ नई नई चीजें कर सकते हैं। जैसे एक बार आपने ऑर्गेनाइज मतलब मार्केट क्रैक कर लिया, तो यू कैन इनोवेट, यू कैन ट्राई, और यू कैन जस्ट टेक द प्रोडक्ट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। जैसे उन्होंने संतरा बर्फी है, रेस्ट ऑफ इंडिया वाज अनअवेयर ऑफ दैट, सो दे पॉपुलराइज इट, राइट। तो काफी अच्छा खासा सेल वहां से आता है। तो इस तरह की चीजें हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ लेसन टू लर्न फ्रॉम दिस केस स्टडीज। तो बस इतना ही कहना था आप सभी से कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गो अहेड। एंड thank you so much, team Startup Conclave, taking question and answer. But, thank you so much, team Startup Conclave, for inviting me here. It was pleasure sharing my experiences with you. Topic is also very good, and I heard that you are coming up with lots of networking sessions and Shark Tank like things. So all the very best. I also try to become part of it wherever I get time or wherever I can. So great initiatives. I also heard like your uh, कुछ ऐसा B2B का कुछ कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस प्लान दैट वुड बी सेंट्रल इंडिया बिगेस्ट वन। सो ऑल द वेरी बेस्ट।
तो सुन के तो काफी अच्छा लगा, उसी तरह का एग्जीक्यूशन मैं एक्सपेक्ट करूंगा. So all the very best. That was great, sir. Rightly said, startup should be a business, not charity. It must be fundamentally strong, and it is essential to create a cash flow and to always search for opportunities. So now we can open the room for question and answer session. So there is one question from YouTube Live asked by Devesh. Why startup fails in their early stages? So there are many reasons of startup failure. तो पहला एक बिग रीजन ये आता है कि काफी डिपेंडेंसी ज्यादा होती है एक्सटर्नल फंडिंग पर. For everything you need to raise external fund. So you need to just figure it out if you're starting anything. At early stage, you can put in your money, or you can bring some angel investors and take their money, or you can raise a seed round, for example. But that money will be limited, or will be with you for maybe 6 months, 1 year. So you just have to make sure like how can I profitable in the first 6 months of the operation, or first 1 year of the operation. If you look at the most of the traditional businesses which are growing at light speed, they did something like this. They became profitable in 6 months because there was no other option, right? Yeah. Because at that time, raising the money from public market or IPO was also very difficult way to raise money. Just forget about VCs and angel investor at that time. So that is the case. So that is the one reason. Another thing is like conflict among startup founders. That has been the case in many startups recently. So pick your startup founders wisely. It's not like if you're a good friend, then you can become good founders. So you need to look at lots of things, like when there is a fight in a group, then how the people behave. So you need to observe small things. What are you also need to check the integrity, right? वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, बहुत ज्यादा विल पावर है, लेकिन उसके पास अगर इंटीग्रिटी नहीं है, so that can become very dangerous for you, right? And so integrity is very very important. That उसी के बेसिस पे जो हमारी बेसिक वैल्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है while रनिंग अ बिजनेस. और तो साथ में आप चला रहे तो आपको सारी चीजें, बिकॉज देखिए ना, शॉर्ट टर्म में आप लोगों को पागल बना के पैसा कमा सकते हो, बट आप किसी भी पर्सन को पागल जिंदगी में एक बार बना सकते हो, दूसरी बार वो नहीं बनेगा. तो इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म थिंकर, यू विल जस्ट ट्राई टू सी कि कैसे मैं पागल बना के पैसा कमा लूं, बट इट वोंट लास्ट लॉन्गर. अगर आपको लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हो कुछ 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन, विल हैव टू प्रोवाइड एक्चुअल वैल्यू. जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी उससे आप कमा रहे हो तो वही लॉन्ग टर्म चलेगा. तो फाइंडिंग राइट को फाउंडर्स इज इम्पोर्टेंट. एंड देन जैसे कि मैंने कहा कि एक अच्छा टेक ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना फिर प्रोडक्ट बनाना भी मुश्किल है. तो दिस आर द फ्यू रीजन जो जिनकी वजह से स्टार्टअप जनरली. और चौथी चीज जो है कि चौथी और सबसे मेन चीज ये है कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. अगर ठीक है एक चीज आप ट्राई करो, हो ही नहीं रही है, तो आप उसमें थोड़ा पिवोट कर सकते हो मॉडल को. यू कैन जस्ट मेक बिट चेंजेस एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ यू कैन डू. जस्ट कंप्लीटली गिविंग अप इज लाइक हम सुनते तो बहुत है, थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी 1000 बार फेल हुए थे, बताते भी है, बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग इट योर ओन लाइफ, देन कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं उसे अप्लाई करने में. तो जस्ट लुक जस्ट उतने जल्दी मतलब इजीली और क्विकली कुछ नहीं होता है. इजीली क्विकली बस इंस्टाग्राम की वीडियो आप बना सकते हैं इजीली क्विकली, टिकटॉक के बना सकते हो. उसके अलावा व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग समथिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो उसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, परसिवियरेंस होना चाहिए, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी. और यही कुछ चीजें जो आपको स्टार्टअप फेलियर था वो अवॉइड कर सकती है अर्ली स्टेज में. Hello, sir. My name is Rishikesh. It was very insightful to hear you, sir. Sir, my question is like today, as you were talking about distribution and marketing, like I feel it's very easy to build products due to automation and like outsourcing various things, but distribution is where like many people get stuck. So you yourself have built a community of over 2 million people. So how to build a good distribution? Like, can you please guide us on that? Sure. So there are two schools of thought. एक ये बोलती है कि you should build product first and then parallelly you can build a distribution. Then there is another school of thought. Then वो कहते हैं कि पहले आप प्रोडक्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ और उसके बाद प्रोडक्ट बनाओ. आई थिंक बोथ वे काम चल जाता है, बट द थिंग इज दैट आपको आज के डेट में डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है कि आप पहले बनाओ तो प्रोडक्ट बनाना इतना आसान है, ऐसा नहीं है. इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट जर्नी ऑफ मेनी कंपनीज, इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट वन.
प्रोडक्ट बनाना उतना ईजी है नहीं, मतलब अगर आप जब नो आइडिया द टाइम इट डजंट, ऑल दैट मैटर्स इज एग्जीक्यूशन। जब आप एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेंगे देन यू विल गेट आइडिया कि कितना डिफिकल्ट है कोई भी चीज को। मतलब आइडिया पे चार लोग बैठ के बात करना बहुत ईजी होता है कि ठीक है ये तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बट बिल्डिंग ए प्रोडक्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको उसमें मेक श्योर करना है कि आप कुछ अलग दे रहे हैं, वो नहीं कि 10 लोग वही दे रहे हैं आप भी वही कर रहे हो, इट्स नॉट अ कॉपी कार्ड और समथिंग। आपको कुछ नया देना है तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट नहीं लगेगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग लाइक कि आज की डेट में यू हैव लॉट ऑफ वेज, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, इवन दो आप लिंक्डइन पे भी अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो तो वहां पर भी एक अच्छी फॉलोइंग है, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यू। देन यू कैन प्रोडक्ट हंट पे आप अच्छे खासे कुछ प्रेजेंस रखते हो अपनी, वहां पे रिव्यूज देते हो प्रोडक्ट्स, तो वहां पे आप अच्छे खासे अपनी फॉलोइंग बिल्ड कर सकते हो, कोरा पे आप बिल्ड कर सकते हो अच्छी खासी फॉलोइंग। तो उनके बेसिस पर आप अपने जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं वॉट एवर यू बिल्ड यू कैन टेस्ट दोज प्रोडक्ट्स, सी दिस इज व्हाट आई हैव बिल्ड, आई जस्ट वांटेड अ क्विक फीडबैक। इफ द प्रोडक्ट इज गुड देन मार्केटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, कितना भी स्ट्रॉन्ग आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ आपको मार्केटिंग करना ही करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप यही है कि अर्ली टेस्टिंग जो होता है, बीटा टेस्टिंग हम उसे कहते हैं, दैट बिकम्स वेरी इजी, और अर्ली ट्रैक्शन भी आपको क्विकली मिल जाता है, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि चलो यार खरीदने वाले लोग हैं। बट आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट बिल्डिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट नॉट इनफ। तो आप एक तो ये कर सकते हैं जैसे कि मैंने जैसे बनाया डिस्ट्रीब्यूशन, इफ यू लुक एट द स्टोरी और जर्नी ऑफ ग्रो और जीरो था, उन्होंने मार्केटिंग के पैसे डाल के भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। जीरो था नितिन कामत ग्रेट ग्रेट फॉलोइंग बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स, एंड देन उन्होंने प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाया कि वर्ड ऑफ माउथ वर्क होता गया उनका। Their marketing spend is zero. Their profits are more than 1,000 crore, in the last year. So it is also depends कि like product अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केटिंग लगेगी नहीं, मार्केटिंग तो आपको करनी पड़ेगी, राइट। उन्होंने बहुत सारे अपने पार्टनर्स बनाए, इन्फ्लुएंसर्स को या बाकी लोगों को, और उनके जरिए फिर प्रोडक्ट बेचा है। तो यू नीड टू कम अप विद इनोवेटिव वेज, जिनके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आप उनको कॉन्टैक्ट करो, उनसे करवाओ। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द वे, लाइक मेनी पीपल आर डूइंग द सेम। तो आप एक ऑडियंस बनाना इज वन थिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अनदर थिंग, कि उनके जरिए भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो देर आर वेज, कि जरूरी नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन है तो वही बिजनेस बिल्ड होगा, बट हाँ मतलब यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग द ऑडियंस ऑन लिंक्डइन और कोरा, अगर आपका बाकी जगह भी प्रेजेंस है तो वहाँ पे आप पैरेलली कोशिश करो, बट ऐसा नहीं कि फिर प्रोडक्ट बाजू में रहेगा और आप उसी में चले रहे हो, राइट। सो पैरेलली यू कैन डू बोथ द थिंग्स, build the distribution, build the product, because product also takes a lot of time. If you when you start building the product then you'll get a fair idea, it takes a lot of time to build the product, and meanwhile you can build the distribution. Two things parallelly करेंगे तो I think that would be better. Thank you, sir. Yeah. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On the behalf of E-Cell VNIT team, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest and speaker, Mr. Prasad Lendwe, sir. Thank you, sir. Thanks to all participants who made the event a memorable one. Thank you so much, Tim. Yeah. Launching in December, Startup Conclave is Central India's biggest B-Plan competition. This year, we are coming up with networking meets, mentorship rounds, and real-life pitching experiences. It aims for participants to strengthen their quality connections, gain knowledge about entrepreneurship, improve their going startup, and focus on growth utilizing collaborative and supportive relationships that can be made through networking meets that we have arranged in various cities across the country for the participants, giving them more exposure. We have come to an end to our first episode of our Expert Talk series. Stay tuned for our next episode on November 16th, and don't forget to follow our Instagram, LinkedIn channels for further details. And at last, our vision is an India where every individual is financially aware. We dream of the day when everyone will be able to plan out their own finances, take investment decisions on their own, and otherwise financially independent. As rightly said by Prasad sir. Thank you, sir. Thank you so much. Sir. Yeah, it was nice sharing my experiences. Thank you so much. All the best for all your future events. Yeah, bye bye. Thank you. Thank you, sir. Bye bye.